I will shine on tomorrow, light the way for all to follow. From the darkness I will shine. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. The one who believes in Allah, Allah will guide his heart. Subhanallah. And let me tell you one thing. This is not a kind of belief like believing in existence of Allah. This is actually trusting Allah. अल्लाह पर यकीन करना. जब आप किसी मुसीबत में हो एंड आपको उस मुसीबत का हल ना मिल रहा हो एंड यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव पुट ऑल योर एफर्ट, देन व्हाट यू डू, आप अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं. यू वर लाइक, अब यकीनन अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकालेगा. आपको वो होप होती है कि अब यकीनन अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकालेगा बिकॉज मैंने अपनी हर एफर्ट पुट किया और मैंने अपनी बेस्ट ट्राई दी है. येट मुझसे ये मसला हल नहीं हो रहा और अब मैंने ये मामला अल्लाह के हवाले किया और यकीनन मुझे अल्लाह इस मुसीबत से निकालेगा. और आपको 100% श्योरिटी होती है. यू नो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस आयत में, दैट आई विल गाइड हिज हार्ट, बट दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम. ये तो मेरे मसले का हल नहीं है. कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, कोई मैरिजेस इश्यूज़ होते हैं, तरह तरह के इश्यूज़ होते हैं. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स. फिर हम दुआ करते हैं और हमें इस मसले का हल नहीं मिलता. हम दुआ भी करते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं होता. एंड फिर अल्लाह ताला से हम शिकवा करते हैं कि अल्लाह मैंने इतनी दुआ की, मेरे मसले का हल नहीं मुझे मिला. द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. फिर हम शिकवा करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें उस मसले से नहीं निकालूंगा. हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि तुम्हारा वो मसला सॉल्व ना हो, लेकिन आई विल गाइड योर हार्ट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. That is the best solution. We do not understand that. We don't realize that. The most precious thing in this world is the guided heart. And I want to talk about it. This is something कि हम इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. जब भी हम मुसीबत में होते हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल. या फिर हम नॉर्मल अपनी दुआओं में दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे पे कोई मुसीबत ना आए. जब मुसीबत आती है हम पैनिक कर जाते हैं. हमारी दुआएं पता क्या होनी चाहिए, दैट अल्लाह ताला जब हम पर मुसीबत आए ना तो मुझे उस मुसीबत पर साबित कदम रख. गिव मी गाइडेंस, गिव मी गाइडेंस, गिव मी पावर, गिव मी स्ट्रेंथ. एक्चुअली यू आर आस्किंग फॉर द गाइडेंस. अगर इन सब चीज़ों को समराइज़ किया जाए ना, गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी पेशेंस and give me power, to tackle all those problems. That actually means you're asking for the guidance. यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही है. And we should always ask for the guidance. This is something very important. अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा कि अगर तुम मोमिन हो जाओगे तो तुम पर मुसीबत नहीं आएगी. अगर तुम नमाज़ें पढ़ने लगोगे तो तुम पर कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती. Where did Allah say that? Nowhere. But there is one thing that Allah will give you, that is the guided heart, the guidance. And it is the most important thing because Allah says in the Quran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, that I have created you in difficulty, in hardship. मैंने तुम्हें मुसीबत में पैदा किया है. ये अल्लाह ताला ने क्लियरली कुरान में कहा है. एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि नमाज़ें पढ़ने से मुसीबतों का हल मिल जाएगा आपको एंड problems will never occur at all. How can you claim that? But there is one thing that Allah will give you, that is the guidance. It is very important. We see in the world there are people who are super rich. They have all the luxuries we can ever imagine. And जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं हम कहते हैं यार इन लोगों पर कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, ये लोग कितने खुश होंगे. But let me tell you one thing, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं पैसे वाले जो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते हैं, जिनको नींद नहीं आती विदाउट टेकिंग स्लीपिंग पिल्स. व्हाई? बिकॉज देयर हार्ट्स आर नॉट गाइडेड. उनके पास सुकून नहीं है. सो दे माइट डोंट हैव all the biggest problems in the world, but they don't have sukoon, sakina, the peace,
because their hearts are not guided. और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को देखेंगे who are not financially good enough but still they have peace, you know, and you'll see them smiling most of the time. They will never complain. You know why? Because their hearts are guided. You know, that's why they don't complain. And जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, you're like, how come these people are smiling all the time? They don't have much money. They cannot afford a proper meal. You know, their kids are not going to school, but still they never complain because their hearts are guided. And we should always ask for the guidance. You know what else happens when you have a guided heart? Even if you're a slave and your master is punishing you and asking you to say a word that go against your aqidah, and you're like ahadun ahad, you don't say a word that go against your aqidah, you know. I'm giving you a reference from Bilal radiallahu ta'ala anhu's story, you know, because he had a guided heart. And you know, Sumayya radiallahu ta'ala anha, her body was split into halves, literally, with a spear. But she wouldn't leave Islam. And now she's in Jannah. A guided heart doesn't feel anything. A guided heart is stubborn, you know. Never leave the truth. Never leave the truth. It's very important. We all need to understand that. And you know, the wife of Pharaoh, Asiya, you know, फ़िरौन किस तरह से उन पर जुल्म करता था, but she wouldn't say a word that go against her iman, you know. She wouldn't say a word. इतना फ़िरौन ने जुल्म किया कि she passed away, literally. अल्लाह ताला ने उनकी स्टेटमेंट कुरान में कोट की है, उनकी दुआ कि या अल्लाह आई वांना जॉइन यू इन जन्नह. अल्लाह ताला ने उनकी स्टेटमेंट कुरान में कोट की है बिफोर हर डेथ. A guided heart doesn't feel anything. And you know, there are thousands of examples. The household of Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu and Fatima bint Muhammad radiyallahu ta'ala anha. They were financially far below average. You know, they didn't have anything. Did not have anything. But they would never complain. They would never complain. Because their hearts were guided. They wouldn't care. And we should understand this thing कि हमें ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे पे कोई मुसीबत ना आए, because this is never gonna happen. We should always ask for guidance. हिदायत की दुआ करनी चाहिए, because if you have a guided heart, when the problem will come, you'll be able to face it. You'll have strength, you'll have power, you have patience, and most important, you will have sakina in the end. Peace is the most important thing. May Allah give guidance to all of us. Barakallahu wa lakum fi Quran al-Hakim. Assalamu alaikum.